Hello students, now it is topic 13. Topic 13, vectors. Topic 13, vectors. It is a lecture on general vector theory. Then first ये बात क्लैरिफाई करें पहले कि फिजिक्स में क्वांटिटीज को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज, थर्ड इज टेंसर क्वांटिटीज. टेंसर क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में. टेंसर क्वांटिटीज पर टेंसर कैलकुलस नाम से पूरा एक्सप्लेनेशन होता है. फिलहाल हमारे सिलेबस में जितना हम पढ़ेंगे उसमें कुछ एग्जांपल्स में, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये वर्ड आप रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. अब बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टू क्वांटिटीज आर मेन. इट इज स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. अगर क्वांटिटी अपने एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्वांटिटी की, then it is called scalar quantity. Scalar quantity means if a quantity can be explained by magnitude only. By magnitude only, if you explain a quantity, then it is a scalar. But if direction is important, then it is called a vector quantity. जैसे केस लीजिए आप कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर two forces are working in this object in opposite direction, and the forces of 5 Newton magnitude are applicable on that object, the net force on the object, there will be a net force in the object. मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको बाद में. In the second case, both the 5 Newton forces are working in the same direction, and in third case 5 Newton forces working in this direction, 5 Newton forces working in this direction. These are three cases, and we are discussing about force. What quantity is force? I don't know. We are discussing that what is force. Either it is a scalar or vector. टेंसर थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एक जनरल एग्जांपल है आप लोगों के सिलेबस में, तो वो हम अभी स्टडी के डिस्कशन से हटा रहे हैं उसे. हम केवल स्केलर और वेक्टर पे डिस्कस कर रहे हैं. देन force, we are discussing about a quantity named force, and these are three diagrams. Similarly, इसके बिल्कुल co-parallel एक केस और समझिए कि that is a point A and a man is moving from point A to B or running from A to B and do some work. After that he returns to the original point A in this manner. This is A point, B point, a man taking some object in his head, running from point A to B. After that he returns to the original point A. This is the track. In the second way, a man moves from A to B in the same pattern, then from B to C. And in the third case, man moves from A to B, then from B to C. These are two cases. This is the example of work. He is working from A to B, then from B to A, B to A again, here A to B, B to C, A to B, B to C. In this case, these are three cases for work, these are three cases for force. then हम यहाँ पर एक रिजल्ट देखते हैं. अब ये कॉमन प्रैक्टिस की और हमारे विजुलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन है. ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन के दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, then we know that object remains still in its position. It means net force is 0. ये बात हम अपने कॉमन एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. और ये आप भी समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन के दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 न्यूटन हो जाएगा. It means object remains still in its position, but if both the forces are working in same direction, both the forces are working parallel to each other, then object will move with twice the acceleration. If 5 Newton force gives an acceleration of A to the object, then by using these two 5 newtons, the resultant acceleration of the object will be double, so force will become double. It is 10 Newton.
मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, हमें नहीं पता कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, बस मैं एक विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि हम कैसे पता लगाएं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। देन द रिजल्ट ऑफ दीज टू 5 न्यूटन इज 0 न्यूटन, और ये आंसर मैंने लिखा है प्रैक्टिकल बेस्ड, क्योंकि ये बात आपने भी एक्सपीरियंस की है, मैंने भी एक्सपीरियंस की है। Then if both the forces are working in the same direction, resultant will be twice, क्योंकि बॉडी डबल एक्सेलरेशन से प्रोसीड करने लगेगी। और अगर बॉडी पर 5 न्यूटन के दो फोर्स परपेंडिकुलर वर्क करें तो आप जानते हैं बॉडी इस डायरेक्शन में बिल्कुल मिडिल डायरेक्शन में मूवमेंट लेगी, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू दैट। इन दैट केस particle will move with acceleration a in this direction, and this one will be different from this. So these are three cases. It means if we explain force, then direction is important to explain it. Direction की importance अगर नहीं होती, then ये जो 5 न्यूटन का रिजल्टेंट है और इस केस का जो रिजल्टेंट है ये सेम आना चाहिए था, and that should be same in that case also. It means direction is important in this problem. It means that direction is important to explain force. So we can say that in the explanation of force, magnitude is important, but direction is also important. By changing direction, we can make 0 Newton resultant by help of 2 5 newtons, or 10 Newton can also be obtained by 2 5 newtons. And in this case, further study में आप लोग सीखेंगे, this will be 5√2 Newton, and how we can obtain this. This can be obtained by using 2 5 newtons perpendicular to each other. अब एक बार इस एग्जांपल पे आइए, एक पर्सन A से B तक प्रोसीड करता है, थोड़ा टायर्डनेस, B से A तक वापस लौटता है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो A से B तक जाने के बाद जब वो B से A तक लौटेगा तो उसकी सारी जो टायर्डनेस है, थकान है, वो दूर हो जानी चाहिए। लेकिन अब फिर एक एक्सपीरियंस की बात है, आप क्या सोचते हैं? अगर एक बंदा A से B तक कुछ वर्क करे और B से A तक वापस आए और उतना ही वर्क फिर करे, तो उसकी थकान गायब हो जाएगी या टायर्डनेस डबल हो जाएगी? देन ये प्रैक्टिकल रीजन की बात है, आप भी जानते हैं, हमें सभी लोगों को मालूम है देन कि वो दुगनी थकान हो जाएगी उसे। इट मीन्स if a man moves from A to B then returns from B to A again, then its work will be double. Suppose in one round A to B net work is W, then in this complete round it will be 2W. In second case, he moves in direction and from B to C he still remains in the same direction, but in that case also the net work done is 2W again. And in the third case he is moving along east first, then along south, but the answer remains still, it is 2W again. It means it doesn't matter in work what is the direction of motion. ये जो हम आंसर दे रहे हैं ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप इसको फील करके देखें, पहले इसको आप एक्सपीरियंस बनाएं कि अगर एक व्यक्ति A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करे, देन B से BC तक मूव करे सेम डायरेक्शन में, तो वो 2W वर्क करेगा। लेकिन अगर वो A से B तक मूव करने का B से A तक वापस लौट रहा है तो भी वो 2W। And if he is moving perpendicularly in two tracks, first east then south, then the work will remain same, it will be 2W again. It means on changing direction the answer remains fixed. It means work does not depend upon direction. Magnitude is important here but not direction. Implies that these type of quantities are scalar quantities. So work is a scalar but force is a vector quantity. In force डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, ये हमारा फोर्स को डायरेक्शन देने का वे है जिसकी हेल्प से हम 5 न्यूटन को 0 भी बना सकते हैं, 5 न्यूटन को 10 भी बना सकते हैं, और 5 न्यूटन को अप्रोक्सीमेटली 7 न्यूटन भी बना सकते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 न्यूटन। सो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन चेंज करके हम अपने रिजल्ट को वेरी करा सकते हैं, बट स्केलर्स आर mass is a scalar quantity. It means mass का resultant जब calculate किया जाएगा तो उसमें direction नहीं देखी जाती है. The sum of 1 kg and 2 kg is always 3 kg. There is no importance of direction. Time is a scalar term. It doesn't matter in which direction your clock is working. It means
1r plus 1r is every time 2r. There is no method by which we can add these two 1r's in such a manner that the result will be 1.5r. It will always be 2r. So time, work, mass, length, these are scalar quantities. And force is a vector quantity. Momentum is also a quantity in this category. Momentum, impulse, acceleration, velocity, these are vector quantities. So first understand the definition. Vectors are those in which quantity and magnitude both are important, whereas scalar quantities are those in which only magnitude is important, there is no need of direction. Now, since there are two categories of quantities, so two type of physics is there, two type of mathematics is there. One is called algebra, normal algebra, and second is called vector algebra. One is called algebra and second is called vector algebra. So we can also define our concept on the basis of these algebras. Normal algebra is the algebra which works on scalar quantities. The quantity follow normal algebra are known as scalar quantities, whereas quantities follow vector laws, vector principle, vector algebra are known as vector quantities. क्या डिफरेंस है दोनों algebra में समझें, एक बार कंसेप्ट को समझें. If there are two magnitudes A and B, let A and B be the magnitude of two quantities. A is the magnitude of first quantity, B is the magnitude of second quantity. Both the quantities are same. एक टाइम और एक मास नहीं है, दोनों मास हैं, दोनों लेंथ हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेलोसिटी है, दोनों इम्पल्स हैं. These are two quantities A and B. Then on the basis of algebra, their result will be, the possible result will be A plus B. The possible result is A plus B. It means in a scalar algebra, the result of A and B is always A plus B. But if A and B are magnitude of two vector quantities, similar vector quantities, then you may vary the result from A minus B to A plus B. This is the basic difference between scalar and vector algebra. 3 and 5, if the magnitude of two quantities are 3 and 5, same quantities, then in scalar algebra their result will be always 8. Normal algebra में 3 and 5 the result will always be 8. But in vector algebra अगर दो vectors 3 and 5 हैं तो उनका result हम 5 से 3 difference करके 2 और sum करके 8, 2 से 8 तक जो result बनाना चाहें बना सकते हैं. Vector quantities में difference से sum तक की range में कोई भी आंसर आप acquire किया जा सकता है, but scalar algebra gives only the result as their summation. A and B, if two quantities, then their result will be A plus B. If A and B are two vector quantities, then their result ranges from A minus B to A plus B. So there is scalar algebra and this is vector algebra. Scalar algebra, vector algebra. Scalar algebra, the result will be always summation of these two, but in vector algebra it will be A minus B to A plus B, ranging from difference to sum. For example, if 5 Newton and 5 Newton, these are two forces working on a body, then their result will be in the range of 0 Newton to 10 Newton. You can give any of the answer, 0 Newton to 10 Newton. So it is simple. Algebra is a normal thing and we studied it earlier, but vector algebra is a new thing in 11th class for competitive students. So concentrate now how we have to make the vector algebra, how we have to use vector algebra in our questions. So for vector algebra, consider it. First, vectors. How many kind of vectors are there? First we have to study how many kind of vectors are there. सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है कि इफ इट इज अ लाइन AB joining two points, it is a line AB joining two points and the arrow represents the direction of a vector and the arrow represents the direction of a vector, then there is a line AB, arrow represents the direction of vector,
This is called the representation of a vector. This is a vector. How to represent a vector? This may be force, momentum, impulse, any vector quantity. This represents a vector quantity A to B, and this arrow indicates the direction of a vector. Suppose this is a vector, then it means this is the direction of that vector. If it represents impulse or momentum, then this represents that momentum direction is from east to west, and it is from west to east. So some categories of vectors are there. Very first is null vector. Null vector means a vector quantity whose magnitude is 0. Magnitude is 0 means if 5 Newton force is subtracted by 5 Newton force, then resultant will be 0. But since vector quantity and vector quantity both are vector quantities, so their difference should be a vector, so 0 Newton. These type of vectors are known as null vectors. इनका magnitude 0 होगा, but ये vector quantity से affiliated है, तो इन्हें vector माना जाएगा. Second is a unit vector. Unit vector means a vector whose magnitude is 1 unit. Quantity may vary. जो quantity आप लेना चाहें ले सकते हैं, but if magnitude is 1 unit, then it's called unit vector. Unit vector whose magnitude is 1, and in any direction you can take it. 3 fundamental unit vectors are I for x-axis, I for x-axis, J for y-axis. These are standard notations. J for y-axis and K for z-axis. K for z-axis. These are 3 standard vectors. We will use these standard vectors in our practice in future. First understand how many kind of important vectors are there. It is null vector, unit vector. Third is negation of a vector. Negation of a vector. Negation of a vector means if AB is a vector, then without changing its magnitude, if we change its direction, without changing magnitude, if we change its direction, then this one is known as negation of this one. If this is AB vector, then this will minus AB. It is BA vector. Every time in physics, BA vector will always be negative of AB vector. Only direction will change, magnitude remains same. AB vector, magnitude x unit, and still it is x unit, but direction is opposite to the earlier, so BA vector is minus AB vector. एक बात और ध्यान दें, दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल साइन का मीनिंग है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझें. द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर क्वांटिटी स्केलर्स की तरह नहीं है. अगर दो फोर्स हमारे पास हैं ए बी एंड सी डी, मैं फोर्स को कंटिन्यूअसली एरो बना के शो कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम स्टडी कर चुके हैं कि वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेशन. सो एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एरो मैनर. ये हमारी कंफर्टेबिलिटी और मैथ्स को इजीली अंडरस्टैंड करने का तरीका है. तो ए बी इज अ फोर्स, सी डी इज अ फोर्स, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, वाई यूनिट मैग्नीट्यूड and y unit magnitude, but their directions are not same, so AB vector is not equal to CD vector. You can't write that these are equal, but magnitude can be taken as same. AB mod is equal to CD mod. It means their magnitude are equal, but vectors are not equal. Vectors equality तभी शो करते हैं जब magnitude के साथ साथ direction में similarity आ जाए. These two are equal in magnitude. Mod means magnitude, but their directions are not same, so there is no equal sign between them. AB is not equal to CD, but their mods are equal. So this is a null vector, unit vector, negation of vector, and equal vectors. And these are general cases. Early classes में आप जब mathematics में इस topic को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी बस एक प्रीलिम आइडिया क्रिएट कराने की कोशिश की जा रही है कि how you have to understand vectors. एक important term और समझें कि वेक्टर्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्ट उनके डिफरेंसेस सम तक कुछ भी एक्वायर किया जा सकता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ
इस तरीके की कंडीशन है, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स 10 न्यूटन and 8 Newton. Then if we use this diagram as we studied, if we make the resultant of these two 10 and 8, then if we choose this diagram AB then BC in the direction of AB, then their resultant will be 10 plus 8, it is 18 Newton. If we use both the forces in the same direction parallel to each other, 0 degree angle case, then the result will be 18 Newton. Second case, if we choose AB in a direction, choose AB in a particular direction and BC with some angle, AB and BC with some angle, then their resultant will be less than 18. Now it is less than 18, it is less than 18. The magnitude is less than 18, sorry. Then the magnitude x Newton is less than 18 and angle will be about 0 degree to 90 degree. This angle is always measured from arrow to arrow. If this is a diagram, then first this diagram is called head tail principle. This is the first vector and at its head the second vector is attached in this manner, so result will be the direct line joining first point to last point. The outside angle is called angle between two vectors. This is the direction of AB vector, this is the direction of BC vector, and this outer angle is called angle between two vectors. अगर दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो भूल से इसे एंगल कंसीडर नहीं करें, दैट इज नॉट एंगल. Angle is measured in this way. This is the angle between two vectors. Angle between two vectors. So in this case, result will be less than 18. X is less than 18 Newton, and angle is between 0 to 90. Similarly, if we increase this angle continuously, then for a particular method in which angle will become 90 degree, the resultant 10 and 8 will be under root of 10 times 100 and 8 is 64. It is under root 164. Under root 164, about it is 13, 12 point something to 13 point something. Approximately it is 12.8 to 12.9. This will be the answer approximately, and angle is now exactly 90 degrees. So similar direction में लेने पर दोनों का रिजल्टेंट 18 न्यूटन है. एंगल को हम बदलते जा रहे हैं, रिजल्ट घटता जा रहा है. फॉर परपेंडिकुलर केस इट इज 12.8 to 12.9. Similarly, if we turn the second vector in the same direction, it means now the angle is obtuse, then result will be less than, further less than this value. It will be less than 12.13, less than 13 now. It means now the result is less than 13, it is approximately 10 Newton, and angle is obtuse now, it is greater than 90 degree. And ultimately, if we take 10 Newton in a direction and 8 Newton just against direction, then their result will become 2 Newton only. First 10 Newton, then difference of 8 Newton since the direction is opposite. So result is 10 Newton plus minus 8 Newton. We know that if a vector changes its direction, then its magnitude will be negative of that. It is 2 Newton now. So result is only 2 Newton and angle is called 180 degree. 180 means the first direction and the second direction. So one arrow is here, second is in backward direction, so angle is 180 degree. It is 180 degree case. So we see that the resultant of two vectors may vary from the maximum, the addition of these two, to minimum, the difference of these two. So minimum magnitude of two vectors is the difference of their magnitude, and maximum possible magnitude of resultant of two vectors is the sum of their magnitude. But in the scalar cases, you can achieve only the sum as their result. There is no choice. In the scalar quantities, 2 plus 3 is always 5, but in vectors, it will vary from 1 to 5. Okay, this is a general meaning of vectors. Now, there are two important law for finding the resultant of vector. First is called triangle law. Triangle law, and second is called rectangle law. Rectangle law. Triangle law and rectangle law. Triangle law and rectangle law, what are these laws? If there are two vectors
AB and BC, if there are two vectors AB and BC, or suppose there are two vectors AB and BC of some general magnitudes, then according to triangle law, first we should draw a vector AB, and in the head of first vector we should join the tail of second vector. AB BC के बीच में एंगल आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉब्लम में. सपोज इन दिस प्रॉब्लम इट इज 60 डिग्री, सो मेक एन आउटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इन दैट. फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, देन सेकंड वेक्टर. मैं आपको ट्रायंगल लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देन दिस AC विल गिव द आइडिया अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. देखिए रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होगा, बट अभी हम पहले आपको ये मीनिंग बताएं कि बाय डायग्राम हाउ वी कैन अचीव द रिजल्टेंट. So AB is the first vector, BC is the second vector, 60 degree is the angle, AC will be the result. Result will always be from first point to the target point. This is AB vector, first vector के head से second vector का tail लेकर के second vector BC. This AC is the result of AB and BC. 60 degree is the angle between these two. This is called triangle law. Triangle law. This is triangle law. Triangle law से result निकाला जाता है by diagram से. अगर rectangle law हम use करते हैं तो हमें वेक्टर कुछ इस मैनर में बनाने होंगे. फर्स्ट AB वेक्टर, देन AC वेक्टर, एंड सपोज एंगल इज 60 डिग्री बिटवीन दीज टू. देन दिस इज AB, दिस इज AB वेक्टर, दिस इज AC वेक्टर. देन कंप्लीट द डायग्राम. As a parallelogram, the diagonal of this parallelogram will be the result of the complete angle is 60 degree. This AD is the resultant. This is called parallelogram law. This is triangle law. Basically दोनों एक ही concept है, लेकिन वो diagram के basis पे थोड़ा सा difference है. Suppose 10 Newton and 8 Newton are two forces and angle is 45 degree. Then by triangle law, first we draw 10 Newton. Then at an angle of 45 degree, draw the second one. It is 8 Newton. The direct diagonal will be the resultant of these two. This is 10 Newton, this is 8 Newton, and this is the resultant. आप स्केल से मेजर करें इसकी लेंथ, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. हालांकि सब के लिए मैथमेटिकल इवैल्यूएशंस फॉर्मूले भी होंगे. सेकंड, इफ वी यूज पैरेललोग्राम लॉ, देन दिस इज 10 न्यूटन and at an angle of 45 degree this is 8 Newton, and complete this parallelogram you will get the diagonal as their resultant. It is the resultant of 10 Newton and 8 Newton. It is the resultant direction. So both are same. अगर आप डायग्राम को डीपली देखें तो ये 8 न्यूटन से ये भी 8 न्यूटन, it is 45 degree. So this resultant is same as this resultant. बस मेथड अलग अलग है, resultant निकालने का तरीका दोनों मेथड का एक ही है. So this is the general theory of vectors. General theory of vectors means how to make the result of two vectors. दो वेक्टर का resultant निकालने का जनरल मेथड. इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का resultant अचीव करते हैं. तो पहले एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में क्रिएट करें. वेक्टर्स के लिए ये कुछ इस तरीके का डिस्कशन नहीं है कि हम वेक्टर के नाम पे कोई पर्टिकुलर थीम पढ़ रहे हैं. जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं हम उन्हें ही वेक्टर के कंसेप्ट पे पढ़ सकते हैं. वेक्टर पढ़ना हमारे लिए कंपल्सन है. बिना वेक्टर्स के हम कुछ क्वांटिटीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे. सच एज फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर बनेगी तो वी शुड नो अबाउट वेक्टर अलजेब्रा. स्केलरली हम कभी भी फोर्स पे डीप डेप्थ नहीं बना पाएंगे. सो ये एक एडिशनल या हेल्पिंग या अदर मेथड नहीं है. वेक्टर्स इज अ कंपलसरी सिस्टम, कंपलसरी अलजेब्रा. वी हैव टू नो अबाउट वेक्टर्स फॉर फर्दर स्टडी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में मेजरली हमें वेक्टर्स पे डिस्कस करना है.